Hey guys, what is up? Welcome to 100 days of AI के कोई तो भी दिन में. So we have exciting news. I know थोड़ा सा लेट होगा, but क्लॉड ने एक नया मॉडल निकाला है. एंथ्रोपिक ने नया मॉडल निकाला है, क्लॉड सोनेट 4.5. If you guys don't know, Claude 4 and Claude 3.7 used to be the best coding models in the world until GPT-5 came and then GPT-5 ने सब ले लिया. बट अब अब क्लॉड वापस आ गया है. अब आप अगर देखोगे तो एंथ्रोपिक क्लेम कर रहा है कि क्लॉड इज द बेस्ट कोडिंग मॉडल इन द वर्ल्ड फॉर कॉम्प्लेक्स टास्क एंड बेस्ट कोडिंग मॉडल ओवरऑल. हियर्स माय प्रॉब्लम विद इट. ठीक है, मैं पहले ही आप लोगों को दिखा देता हूँ कि अगर आप आर्टिफिशियल एनालिसिस पे जाओगे, आर्टिफिशियल एनालिसिस पे it has a pretty high intelligence score, but ये इंटेलिजेंस स्कोर में जीपीडी ओएसएस 120 भी हाई है. जो मैंने it's not a good model, जीपीडी ओएसएस, बट फॉर एजेंटिक टास्क एट लीस्ट. एंड कोडिंग के अंदर अगर आप देखोगे, टर्मिनल बेंच में ग्रॉक बेटर है, बेंच टेलीकॉम में GPT-5 बेटर है, बट क्लॉड 4.5 सोनेट कम्स क्लोज. एंड यू नो, कहीं भी एक ऐसा सिंगल बेंचमार्क नहीं है जिसके अंदर टॉप पे GPT 4.5 है, बट अपेरेंटली यूजेज के अंदर इट इज़ रियली गुड. ठीक है, सो ये सारे बेंचमार्क स्कोर्स हैं. ऐसा इतना स्पेसिफिक तो अगर आपको पढ़ना होगा तो तुम लोग जाके आर्टिफिशियल एनालिसिस पे पढ़ सकते हो. दैट्स नॉट द पॉइंट ऑफ दिस वीडियो. द पॉइंट ऑफ दिस वीडियो इज एक्चुअली टू लुक एट हाउ क्लॉड इज, हाउ एंथ्रोपिक इज डिस्कसिंग, एंड क्या क्या अपडेट्स आए हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूँ. तो सबसे पहले तो उन्होंने बोला है कि इट्स द बेस्ट कोडिंग मॉडल विच वी विल टेस्ट, एंड इट इज ऑल्सो देयर मोस्ट अलाइंड मॉडल. जो क्वाइट ऑनेस्टली आई रियली डोंट केयर कि ये कितना सेफ और वो सब है, बिकॉज दैट इज समथिंग दैट दे विल जस्ट कीप डूइंग, राइट. दैट इज समथिंग दैट आई जस्ट डोंट रियली थिंक अबाउट हाउ सेफ एन ए आई मॉडल इज. आई नो थोड़ा सा इररिस्पॉन्सिबल हो गया, बट ठीक है यार. नाउ एज पर देम, SWE पे it is outperforming GPT-5, but also here's the thing, right? They also claim that Claude Sonnet 4 was similar to GPT-5 on SWE bench, right? So I'm not getting a lot of value from this benchmark because Claude Sonnet 4 was considerably more worse than GPT. मतलब मैं इतने टाइम से GPT-5 इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि Claude Sonnet 4 was not able to match the performance only, right? So I don't know how dependable this benchmark is, but apparently GPT-5 codex is 74%, and at the best level of thinking, 4.5 Sonnet is 82%. एंड मैंने काफ़ी सारे वीडियोस और काफ़ी सारे आर्टिकल्स देखे हैं विच इज़ सेइंग दैट yes, Claude is actually really good at coding and somewhat better than GPT-5, जो मेरे को थोड़ा सा कम बिलीवेबल लग रहा है. ऑल्दो ये जो सारे के सारे बेंचमार्क्स हैं जो एंथ्रोपिक ने खुद मेंशन किए हैं, उसके अंदर क्लॉड सोनेट 4.5 मोस्ट ऑफ द बेंचमार्क्स में GPT-5 को बीट आउट कर रहा है, राइट. बट ये आर्टिफिशियल एनालिसिस पे स्कोर्स थोड़े से अलग हैं. सो आई मीन आर्टिफिशियल एनालिसिस पे बेंचमार्क्स भी अलग लगाए हुए हैं, दैट्स द रीजन स्कोर्स अलग हैं. बट दैट मेक्स यू थिंक, थोड़ा सा स्केची वाला फीलिंग नहीं आता है कि इन लोगों ने सिर्फ अपने जो बेस्ट है वही उन लोगों ने लगाया है कि हम हमारा इसमें बेस्ट है तो ये बस हम लगा देंगे. लेट मी, हाँ मैं ऐसे ऐसे इसलिए कर रहा था क्योंकि मेरा ऑडियो मेरे को चेक करना था. अपेरेंटली फाइनेंस में इट इज 72%, विच अपेरेंटली रियली पिछले वाले मॉडल से काफ़ी बेटर है. मेडिसिन में सेम थिंग, स्टेम में सेम थिंग. सो ऑलमोस्ट एट ऑल टास्क इट्स
better than the older models, which I mean that's to be expected. And misaligned behavior इसका बहुत ज़्यादा कम है compared to other models. And ये देखो, ये जो इन लोगों ने दिया हुआ है कि GPT-5 से कम मिसअलाइंड है, ये दिस इज अ लिटिल हार्ड टू बिलीव, क्योंकि मैंने इतना यूज किया है GPT-5, आई हैव नॉट सीन इट बी मिसअलाइंड, राइट? मैंने पर्सनली ऑब्जर्व नहीं किया, मैं मतलब जो बोलता हूँ वो करता है. देयर इज नो लाइक नॉनसेंस विद GPT-5. बट ठीक है, वी विल सी हाउ इट गोज. ओके, सो दैट इज द अनाउंसमेंट. क्लॉड कोड के अंदर भी एक अपडेट आया बाय द वे. क्लॉड कोड का वर्जन 2 आ गया है, जिसके अंदर काफी सारे अपडेट्स हैं. देव रिलीज्ड अ नेटिव VS कोड एक्सटेंशन जस्ट लाइक कोडेक्स. देव ऑल्सो इनहेंस द टर्मिनल एक्सपीरियंस, काफ़ी सारे कुछ नए नए फीचर्स डाल दिए हैं. आई हैव नॉट गॉन इन टू द स्पेसिफिक्स, क्योंकि मैं पर्सनली क्लॉड कोड नहीं यूज़ करता हूँ, बिकॉज क्लॉड कोड इज़ एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव. So I don't use Claude Code, but there's a there's new stuff, background task, hooks, sub agents. बेसिकली जितना मैंने रीड किया उससे मेरे को समझ में आया कि कर्सर के अंदर जो क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूवमेंट फीचर्स हैं वो क्लॉड कोड में इन लोगों ने ऐड किए हैं. प्लस आई रियली लाइक द फैक्ट कि इन लोगों ने VS कोड का नेटिव एक एक्सटेंशन बनाया है. I am assuming if you buy the Claude subscription, you'll be able to use it there, but I am not sure exactly how the pricing works. Overall, I stay out of Claude Code क्योंकि बहुत ज़्यादा expensive है. So I'll be more interested in just using it through the web interface or using it through Cursor. So I think Cursor में हम इसको use करके देखेंगे and web interface में use करके देखेंगे. Let's see how it performs. So let's go to Claude, and Claude में जाके let's you know we could ask it to generate a UI, और क्या पूछ सकते हैं यार, because the thing is, what I saw online at least is the UI capabilities remain the same. So I don't know if that's going to be very valuable, but Pinterest से कुछ clone करने का try करते हैं. So usually what I like to do is I like paste the image here, and I like to say describe all the elements in this web app and describe its style with a brand guide to remake this. So I like to write something like this because Claude का जो specific image recognition है, it's not very great, is what I've observed. It is nowhere close to what GPT-5 या फिर what the Chat GPT interface can do with um, this image scanning capability. That's why first मेरे को ये ऐसे scan करना पसंद है. And then what I like to do is once it is done मैं बताता हूँ. बस भाई बस कितना. Okay, so what we can do is copy this, paste it back here, and then I'll paste the image again here just in case it needs it. And then I will say generate a web app in React that looks like this. ठीक है, so that will take a little bit time to do. तब तक हम लोग कर्सर चालू कर देते हैं. कर्सर के अंदर लेट्स मेक अ न्यू प्रोजेक्ट. वॉर्प में कोई अपडेट आया था काफ़ी टाइम पहले, मैंने खोला नहीं है वॉर्प, बट लेट्स सी. या देयर वी गो. ओके, वॉर्प लुक्स फाइन. या इट्स ओके. cd dot dot cd dot dot cd YouTube and mkdir Claude 4.5 Sonnet cd cur dot. अरे my bad.
ओके, तो हमने कर्सर में इसको खोल दिया है. कर्सर में लेट्स सेट इट टू क्लॉड सोनेट 4.5 and I will ask it to set up a next.js project. बहुत सिंपल हो जाएगा एक्चुअली. सेटअप, let's see what is non-traditional programming language. Golang. I mean Golang is pretty popular, but ठीक है. Set up a web server in Golang that serves HTML uh, from a file like a template in um, Django में रहता है ना, Django, and make it so that when we edit the template, it shows up live in the web interface. Let's see. I don't think I have Golang installed, but देखते हैं if it's able to do everything from scratch. That would be very impressive. Meanwhile, should I? ठीक है मतलब. Okay. So इसने UI. Yeah. So what I'll tell you right now is this model is much faster than Claude 4 Sonnet, because I guarantee you if I would have given the same prompt to Claude 4 Sonnet, it would have taken so much longer and probably given a much worse result. I really like what it's come up with. uh, it feels more aligned because ये जो आप UI देखोगे, yes it is not exactly like this, and of course there's a lot of image elements, तो उसको exactly वैसा बनाना hard भी है काफ़ी. Let's see what it looks like in a full screen thing. Oh, नहीं नहीं, ये React है ना. Right, never mind. So how do I make it full screen in the Claude interface? Is there a way to do that, or do I just have to publish? So if you've used the older Claude models, at least मेरे experience में it was a little stubborn with the UI. Like there is this specific style that it wanted to do, and it would just always do that style. No matter what kind of prompting you do, it will just do that style. Just you just can't help it. It'll just do that. And abhi it feels a little more diverse. मतलब पहली बात तो ये पॉलिश लग रहा है. वाइब कोडिंग में क्या होता है कि it makes a lot more mistakes than I'm seeing right here, which is impressive. I was not expecting this. काफी अच्छा दिख रहा है ये. Especially obviously there are mistakes in terms of कि उसका height properly adjusted नहीं है to the screen. There is improper spacing here. ये properly flex नहीं हो रहा है. But the detail of it, what I see is I mean it's pretty impressive, to be very honest. um I want to actually do the same thing in GPT and see what kind of result it gives, क्योंकि I am sure it'll give a better result. So let's see. मतलब I would be shocked if GPT 5 से better इसने perform किया है. Let me just copy the prompt here. So let's copy this. Let's paste this here. And just to keep it fair, ये वाला text भी हम उसको provide करेंगे. So let's copy this. Oh, it's a rewriting. Man, what did I do? What's wrong with the UI, bro? It's for some reason started rewriting it. Anyways, it's a much faster model. I'm thinking कि Claude Sonnet 4.5 is lighter, right? There we go. ठीक है, let's see what this comes up with. Uh, Meanwhile, let's see यहाँ क्या हो रहा है in the
Okay, so it says it's already done. Interesting. I don't think I had Go installed. Yeah, there. See, I don't even have Go installed. Did it not check if I have Go installed? ठीक है, that's fine. Let's ask it to fix that. मतलब उसको Go फिर install करना पड़ेगा. Can you fix this? Let's see what level of vibe coding have we gotten to. If अगर ये actually मेरे लिए Golang system पे setup कर देगा, that would be crazy. Oh, that's way too easy. Never mind. I thought Golang के भी वैसे installation steps रहते हैं, but let's see the code. Uh, I'm just acting. I don't know Golang, so थोड़ा मतलब I get it. समझ में आ रहा है क्या है, but of course I can't judge the code quality क्योंकि मैंने खुद Golang में कभी काम नहीं किया है. But it has implemented a system like Django, which okay. Maybe मैं miss out कर रहा हूँ. Maybe GPT-5 भी ये कर सकता है, but that is impressive. The fact that we can do that now. Okay, a really cool task that I don't think GPT-5 can do is मैं इसको React का कोड देता हूँ and I will tell it कि ये वाला जो Golang का सिस्टम है इसके अंदर implement what I have given. How would that work? I think okay, Golang already has a library for HTML templates. So I think that should not be that hard, but let's try making it happen. सबसे पहले तो let me see if this is on. Yeah, the server is on, right? Okay. Okay. Our completely Golang web app made from scratch by Sonnet 4.5. Impressive. Let's see. Okay, see, this is the thing. Looks like Claude Sonnet 4.5 is much faster than GPT-5 because this was done way quicker. अब हम क्या करते हैं? Let's take the code from here. Um, yeah, so the second variant that it generated, which it's arguably slightly worst मेरे हिसाब से. But ठीक है, let's take the code from here and say this is a web app that I made. Can you make this in landing.html? Make it look exactly the same. ये थोड़ा सा हार्ड टास्क है मेरे हिसाब से. Let's see if it's able to do that. And GPT-5 is still going. And apparently it's using, what the hell is this? GPT-5 decided that the best way to make this web app in React was to use a CDN in HTML, even though the web interface for ChatGPT has an integration to run React directly. Why? Why? Just why? क्या चल रहा है भाई ये? क्या हो गया भाई GPT-5 को? ये क्या? एंड इसने कैनवस में भी नहीं रन किया. इट्स नॉट इवन इन द कैनवस. It's literally just an embed. Sad. That is just sad. Okay. So it is working on. Okay. It would be so funny if कर्सर में मैं जो क्लॉड सोनेट से लिटरल
पूरा का पूरा कोड वापस करा रहा हूँ, and I have started it after GPT-5, that finishes. Okay, no, it finished before. चल ठीक है. Now let's run this. 400 lines of code. I'm not very confident about that. Oh God, it's just a black screen. What happened to GPT-5? ठीक है, let me give it another chance. Um, let's copy this prompt. Let's start a new chat. और इसके अंदर हम thinking चालू कर देते हैं. Let's put it on thinking and standard thinking. Pasted this. Let's paste the image. I swear to God, the GPT-5 router is literally broken, bhai. Matlab, it will never pick the right model, and that was the whole point of GPT-5. Of course, it's a great model, but okay. Uh, the first output was significantly better, ना Claude में. Anyways, इसका देखते हैं. Okay. Oh, so this is done. And technically GPT-5 failed. So yeah. Okay, now it's actually writing React. Thank God for that. अब ये रन करके देखते हैं इसको कैसा. ओके. स्लैश लैंडिंग पे जाके देखें. इट डज नथिंग. Interesting. Let's restart the server. How is it already in use, my man? Okay, ये बंद नहीं हुआ है. Let me just. I know you can pkill, but I'll just restart cursor. It's fine. अरे. You know what? What is the command to pkill it? Uh, let's use the faster model, which is Claude. How to kill a port on Mac. I don't remember the command. Let's see. Acha, else off. Okay. And it's given the port that we want to kill anyway. So, yeah. Else off, and then which one to kill? 8000 था कि 8080 था? Let's see. It's 8080. So else of 8080. There is three things running on it. What? Um, ठीक है. Let's kill this. So kill -9. Oh, I think that should work now. Okay, there we go. Hmm. Where where is my landing.html, man? Hmm. Slash landing पे जाना पड़ेगा. It says slash landing. That's. Oh, pretty good. Okay.
Okay, that is interesting. I don't know if that is impressive or not because I've never done that before, but it feels impressive. Yeah. So that's what Claude 4.5 Sonnet can do. Very impressive. Hmm. So it might be the best model in the world. Who knows? Let's see what Chat GPT has come up with. I hope अब तक output खत्म हो गया होगा यार. It is still going. भाई बस भाई ये मतलब GPT-5 ही वीडियो लंबा करा रहा है मेरा. 25 मिनट हो गए वीडियो को. बस भाई. इनफ. यार. There we go. Let's preview that. I really don't like this initializing environment thing. Why can't they just save a build file there? Allow. Um, am I missing something? Why is this worst? मैंने इसको image दिया था ना. हाँ. Why is this so much worse than the first one? See this part, it's actually better. So much better. This is just random bullshit. And what happened to the font, man? Like, what is this? What is this button sizing? Okay, maybe just GPT-5 is having a bad day. Who knows? Um, ठीक है. I guess you guys have an idea of what's going on with Claude now. Thank you so much for watching. Tada. Bye bye.